Students, class 8th, topic 8th tenses of our न्यू ग्रामर प्लस। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज जिसमें लिखा है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पैसेज, वर्क विद योर पार्टनर, आइडेंटिफाई द टेंस। क्या होता है, टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस होते हैं वर्ब का समय के अनुसार यूज़, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो कहलाते हैं टेंसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे। मिस्टर पिकविक एंड हिज 3 companions stationed themselves in front of the crowd and patiently awaited the commencement of the proceedings. The throng was increasing every moment. And efforts were compelled to retain the position they had gained sufficiently occupied their attention during the 2 hours that ensued. At length, that low roar of many voices ran through the crowd, which usually announces the arrival of whatever they have been waiting. ये तो थी हमारी वर्ब्स। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन सी काइंड है। स्टेशनड है सिंपल पास्ट टेंस, awaited also simple past tense, was increasing is past continuous, past progressive जिसे आप बोलते हो, were compelled past perfect, had gained past perfect, occupied simple past tense, roar simple present tense, ran simple past tense, announces simple present tense, have been waiting is प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ये टेंसेस होते क्या हैं, मैंने आपको बताया। अ वर्ब कैन मेक मैनी फॉर्म्स, और वर्ब किस समय के अनुसार यूज़ हो रही है वो डिपेंड करता है उसके टेंस पे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे सबसे पहले हमें समझाएं। इन्हें समझना बहुत ईजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो और यूज़ करते हो एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जिसमें क्या एक एक्सेप्शन है। सन शाइन्स इन द स्काई, ठीक है। माई फादर गोज़ टू शॉप एवरी मॉर्निंग, और उसी को पास्ट में गो का वेंट कर देते हैं, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आता है इज, एम या फिर आर प्लस आई आता है वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। और पास्ट प्रोग्रेसिव में वही हो जाता है, वॉज या फिर वर आता है और प्लस आई आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, आई एम डूइंग माई वर्क, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। और सिंपल पास्ट टेंस में ही वॉज डूइंग हिज वर्क, दे वर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसी समझ आने के लिए आपको ये रीड करने पड़ेंगे। इसके बाद जब परफेक्ट टेंसेस सिखाए हैं, मैं उनको आपका रूल बस बता देती हूँ। प्रेजेंट टेंस में जब प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज़ या फिर हैव, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि शी हैज़ डन हर वर्क, और ऐसे ही हैव का यूज़ कब करेंगे, दे प्लूरल्स के साथ, दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। ओके, तो ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। याद रखना, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे सारी सेंटेंसेस में यही यूज़ होने वाली है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो होता है हैड, चाहे आपकी वर्ब कुछ भी, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें हैज़ आप था ना, इसमें जैसे कि ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, तो ये जो हैड डन यूज़ हुआ है ये है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। इन सारी रूल्स को आप एक बार और रीड कर लेना। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मैंने आपको बता दिया, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई।
अब आते हैं सबसे पहले हमारी ए एक्सरसाइज पे। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ। देखिए, फादर woke as up before we left the house, but we missed the bus because we went back to sleep. We arrived at the theater well after the play had begun. Fortunately, father had bought the tickets before we reached the theater. The lights had been dimmed as we entered the hall. The chief guest had been welcomed and this play had begun. We found that some other people had occupied our seats. As we were late, the organizers gave our seats to those who had been waiting for vacant seats. We left the hall as our late entry had caused a lot of disturbance to the audience. We missed the show simply because we had been lazy and unpunctual. ठीक है? After doing this, let's move on to exercise B. Tick the correct answers. Options are already given to us. When you were at 7 in the evening, I was watching television. Did you finish your homework yesterday? No, I went to a wedding. Were you in school this morning? Yes, I was practicing for the match. Were they watching the match on television? No, they were studying for their exam. When did Mr. Gautam call? I was cooking when he called. It was about 7 o'clock at that time. Second one option. When did Salim go to sleep? Second option. I don't know. He was still working on his project when I went to bed. What's the matter with Mary? I don't know. She was crying her eyes out when I went in. What is the weather like? It was raining in the morning, but it is clear now. Is the Prime Minister speaking on television? He was speaking, but he finished his speech a while ago. What was pedestrian doing? He was crossing. Pedestrian होते पैदल चलने वाले. He was crossing the road when the cyclist hit him. Okay? तो ये हो गई होंगी. Let's move on to the next exercise. आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आपने कभी कमेंट नहीं करा. Are they helpful to you? आपको मदद मिलती है अपने होमवर्क करने में? प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सी एक्सरसाइज आते हैं. बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी, मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट कर दी है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे. आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल हाई फॉर द लास्ट 4 years. यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है. 4 years. नंबर नहीं लिखना आप. I have not learned the value of perseverance but also hard work. I am repeating again. I have not only learned the value of perseverance but also of hard work. Next, I have realized that teamwork is as valuable as individual performance. I am repeating. I have realized that teamwork is as valuable as individual performance. Second part पे आते हैं. Dhruv has been my friend for the last 4 years. Dhruv has been my friend for the last 4 years. Next, we also have been classmates for the last 2 years. We also have been the classmates for the last 2 years. We have together worked on projects and assignments. We have together worked on projects and assignments. Since we spend much time together, father has asked an agent to look for an apartment closer to his. Since we spend much time together, father has asked an agent to look for an apartment closer to his. Dr. Sahani has been the head of chemistry department since 2010. Dr. Sahai has been the head of chemistry department since 2010. Next is, he has ensured that students get sufficient opportunities to conduct experiments. He has ensured that students get sufficient opportunities to conduct experiments. He has believed that application is the best way of understanding theoretical knowledge. He has believed that application is the best way of understanding theoretical
knowledge. हर किसी के बाद फुल स्टॉप ज़रूर लगा दीजिएगा. Next is, since I have been his student, I have looked up to him with deep respect and affection. I'm repeating again. Since I have been his student, I have looked up to him with deep respect and affection. Okay? तो ये था हमारा C part. D part करना है तो next move करिए. Match the questions with their answers. Interesting exercise. Where did you find the ticket? It D के साथ I had put it away safely in my cupboard. Do you know Delhi well? Yes, I have been there 3 times. Why did you feel faint? I hadn't eaten all day. Fourth, where is Ashok? He had gone for sales conference. Is Harmeet in office? Fifth part है जिसे हम मैच करें. No, he has gone out for meeting. Six, where was Michael last week? He has gone to Punjab. Have you been to Canada? No, I have just been to US. What have you been doing all these years? I have been studying for my master's degree. Did you check if all the names are in the list? Someone had already done that. Have you read this book? Yes, I have just finished reading it. Okay? मैच कर लीजिए. 3, 9, 6, 1, 2, 5, 4, 7, 10, 8. Okay? E exercise. Complete the sentences with one verb in the past tense and other in past progressive. Past का क्या फॉर्मूला होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट प्रोग्रेसिव का was, were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ing. I saw Meera while I was shopping this morning. The family was watching television when I felt the earthquake. We were living in Kolkata when I just started going to school. Karan sprained his ankle while he was moving some furniture. I was having a bath when the doorbell rang. The students were working quietly when the teacher entered the class. I invited my friends for dinner to the hotel where I was staying. Vinita was writing an exam in college when she fainted. TED. The thief broke in while Kavita was cooking dinner. 10th, we were listening to the news. इसमें E missing है. When the storm broke. Okay? आगे चलते हैं एक्सरसाइज F पर. Underline the verbs that are not in correct tense. Correct them. पहले remains आएगा. Some people feeling नहीं, felt, FELT, felt. But it was the brainchild of Carlo Collodi. He was born. Carlo began, BEGAN. He died, DIED. In story, Pinocchio was a wooden puppet. The puppet came, CAME, to life and experienced many unhappy adventures because he was lazy and selfish. When he promised ठीक है, to be honest, a fairy granted, GRANTED, him a wish and changed, CHANGED, into a real boy. In 1952, large funds were collected. Lately, Italian school children donated many and so did well wishes for 20 other countries. These funds were raised by National Carlo Collodi Foundation. The park inaugurated and continued to be a delightful sight for children. It housed a towering bronze sulphur. और बेटा 14 में तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं नज़र आई. It was surrounded by a magic square with mosaic depicting scenes from the book. इसमें कोई करेक्शन नहीं है. I found it correct. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर और सिंस का यूज़, जिसे समझना बहुत ही आसान है. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. फॉर आप यूज़ करते हो जब पर्टिकुलर कोई ईयर दिया हुआ होता है.
ईयर मतलब कितने सालों तक, मतलब ईयर मेंशन नहीं होगा, जैसे फॉर 2 years, फॉर 3 months, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर, फॉर एन आवर, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन कि कब से कब तक, ठीक है। और सिंस यूज़ करते हैं जब आपको एक डेफिनेट टाइम दिया होगा। सिंस यू हैव बीन माई फ्रेंड सिंस 1960, सिंस 9 o'clock, पर्टिकुलर टाइम गिवन है यहाँ पे, डेफिनेट टाइम जब गिवन होगा तो सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सॉर्ट आउट करना है टाइम एक्सप्रेशंस को कॉलम में अकॉर्डिंग टू दिस। सिंस हिज बर्थडे, सिंस द एक्सीडेंट, पर्टिकुलर उस टाइम से, सिंस वी मेट, सिंस आई बॉट दिस कार, सिंस अ मोमेंट, सिंस वी फिनिश स्कूल, सिंस देन, सिंस लास्ट जनवरी, सिंस आई हैव लर्न टू स्विम। और यहाँ पे लगभग जब समय दिया होता है, फॉर 12 years, फॉर 3 hours, फॉर 3 weeks, फॉर 20 minutes, फॉर 9 years। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही है। अगर एक्सरसाइज एच से आगे कंटिन्यू करना है तो यू हैव टू चेक माय नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर इस वीडियो पे थम्स अप होगा तभी आगे वीडियो देखिएगा। इफ़ यू हैव लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय।